Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I am going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language, and their usage in sentence. Each word is divided into two parts with the help of apostrophe symbol. We need to stress on the word before the apostrophe for correct pronunciation. So here are the next set of 25 words. First word is billionaire. A person whose wealth amounts to a billion or more in a particular currency. बिलियनर को हम हिंदी में अरबपति कहते हैं, उर्दू में अरबपति, तेलुगु में बिलियनेरू. For example, the tech entrepreneur became a billionaire after the success of his startup. Next word is biography. An account of someone's life written by someone else. बायोग्राफी को हम हिंदी में जीवनी कहते हैं, उर्दू में गुजरे हुए वाक़ियात की कहानियाँ, तेलुगु में जीवन चरित्र. For example, the library had a vast collection of biographies detailing the lives of historical figures. Next word is birthmark. A mark on the skin formed before birth. Birthmark को हम हिंदी में जन्म चिन्ह कहते हैं, उर्दू में पैदाइशी निशान, तेलुगु में जन्म चिह्नम. For example, the small birthmark on her cheek was considered a family trait. Next word is bitter. Having a sharp, unpleasant taste, showing strong hostility. Bitter को हम हिंदी में कड़वा कहते हैं, उर्दू में कड़वा, तेलुगु में चेदुगा. For example, the medicine had a bitter taste but it was effective in treating the illness. Next word is bizarre. Very strange or unusual, especially in appearance or behavior. Bizarre को हम हिंदी में विचित्र कहते हैं, उर्दू में अजीब, तेलुगु में अद्भुतమైన. For example, the magician's performance included bizarre tricks that amazed the audience. Next word is blare. A loud harsh sound. ब्लेयर को हम हिंदी में तेज़ आवाज़ कहते हैं, उर्दू में चीखना, तेलुगु में उगिसेंदुक. For example, the sirens began to blare as the fire trucks rushed to the scene. Next word is blasphemy. Speaking disrespectfully about the sacred things or expressing strong disrespect for God. Blasphemy को हम हिंदी में कुफर कहते हैं, उर्दू में कुफ्र, तेलुगु में दैवद्वंदकम. For example, the author faced criticism for his book, which some considered to be blasphemy against religious beliefs. Next word is blatant. Done openly and unashamedly obvious. Blatant को हम हिंदी में स्पष्ट कहते हैं, उर्दू में साफ, तेलुगु में स्थानिका. For example, the company's blatant disregard for environmental regulations led to public outrage. Next word is bleak. Bare, desolate and often windswept. Bleak को हम हिंदी में शून्य कहते हैं, उर्दू में खाली, बारीक, तेलुगु में अनर्थकम. For example, the landscape became bleak as we reached the top of the mountain. Next word is bless. To confer or invoke divine favor upon. To wish well. Bless को हम हिंदी में आशीर्वाद कहते हैं, उर्दू में दुआ, तेलुगु में आशीर्वदिंचु. For example, the priest would bless the congregation at the end of each service. Next word is blind. Unable to see, lacking perception, judgment or reason. Blind को हम हिंदी में जो देख नहीं सकता कहते हैं, उर्दू में नाबीना, तेलुगु में अंधम. For example, the blind man navigated the city with the help of his guide dog. Next word is blindfold. To cover the eyes with a cloth or bandage. Blindfold को हम हिंदी में पट्टी बांधना कहते हैं, उर्दू में आँखों पर पट्टी बांधना, तेलुगु में कणुगु निंचेंदुकु. For example, in the game they would blindfold one player and spin them around before they tried to pin the tail on the donkey. Next word is blink. To close and open the eyes quickly. ब्लिंक को हम हिंदी में आँख मिचमिचाना कहते हैं, उर्दू में आँख मिचमिचाना, तेलुगु में मिंगिलिंगी चूडू. For example, she had to blink several times to adjust to the bright sunlight. Next word is bliss. Perfect happiness and joy.
ब्लिस को हम हिंदी में आनंद कहते हैं, उर्दू में खुशी, सादत, तेलुगु में आनंदम। For example, the newlyweds experienced pure bliss during their honeymoon. Next word is blister. A small bubble on the skin filled with serum and caused by friction, burning or other damage. Blister को हम हिंदी में छाला कहते हैं, उर्दू में छाला, तेलुगु में स्वेदा. For example, wearing ill-fitting shoes often leads to blisters on the feet. Next word is bloom. To produce flowers to reach a state of high development or achievement. ब्लूम को हम हिंदी में खिलना कहते हैं, उर्दू में खिलना, तेलुगु में पुष्पानी. फॉर एग्जाम्पल, इन स्प्रिंग द चेरी ट्रीज ब्लूम विद ब्यूटिफुल पिंक फ्लावर्स. नेक्स्ट वर्ड इज ब्लॉसम. अ फ्लावर और अ मास ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ट्री और बुश. ब्लॉसम को हम हिंदी में फूल कहते हैं, उर्दू में फूल, तेलुगु में पुव्वु. फॉर एग्जाम्पल, द एप्पल ट्रीज वॉज कवर्ड इन ब्लॉसम्स promising a bountiful harvest. Next word is bluff. To deceive someone by pretending to be stronger or more confident than one really is. Bluff को हम हिंदी में धोखा कहते हैं, उर्दू में गुमराह करना, तेलुगु में मौसम. For example, he tried to bluff his way through the poker game, but his nervousness gave him away. Next word is blunder. A stupid or careless mistake. ब्लंडर को हम हिंदी में गलती कहते हैं, उर्दू में गलती, तेलुगु में तप्पू. For example, making a blunder during the presentation, he realized he had used the wrong data. Next word is blunt. Having a dull edge or point. Straightforward and honest. Blunt को हम हिंदी में और उर्दू में कुंद कहते हैं, तेलुगु में मोत्तु बारिना. For example, the chef used a blunt knife to chop vegetables, making it safer for beginners. Next word is blur. To make or become unclear or less distinct. Blur को हम हिंदी में धुंधला कहते हैं, उर्दू में धुंधला, तेलुगु में अत्याधिकंगा. For example, the fast-paced action in the movie caused the scenes to blur together. Next word is blush. To become pink or red in the face, especially from embarrassment. Blush को हम हिंदी में शर्म कहते हैं, उर्दू में शर्माना, तेलुगु में मोगमो. For example, she couldn't help but blush when he complimented her. Next word is boost. To talk with excessive pride and self-satisfaction about one's achievements, possessions or abilities. Boost को हम हिंदी में झूठा गर्व कहते हैं, उर्दू में फख्र करना, तेलुगु में गोप्पलु చెప్పుకోవడం. For example, he liked to boast about his accomplishments, but his friends found it off-putting. Next word is bold. Fearless and daring, showing a willingness to take risk. Bold को हम हिंदी में बहादुर कहते हैं, उर्दू में दिलेर, जानबाज, तेलुगु में धैर्यशीलమైన. For example, the explorer made bold decisions to venture into uncharted territories. Next word is bombard. To attack continuously with bombs, shells or other missiles. Bombard को हम हिंदी में बारूद से हमला करना कहते हैं, उर्दू में बमबारी करना, तेलुगु में बम्बाइलतो दाड़ू. For example, the enemy troops tried to bombard the fortress, but the defenses held strong. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.